हूँ आपका लेक्चर इतना बढ़िया रहेगा कि मैक्सिमम क्वेरीज हमारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वंस अगेन वेलकम मैम। Thank you. ओवर टू डॉक्टर कविता बस। Thank you, ma'am. Thank you so much. Now I would like to introduce formally Dr. Sonam ma'am. She is a good friend of mine. Thank you. Dr. Sonam Bansal is presently working as an assistant professor in Government Aided College, Rao Lal Singh College of Education, Sidrawale, Gurgaon. She has 18 years of teaching experience and she is gold medalist in MEd. And the list of achievements is really long. And I mentioned it in brief. She has developed 4 massive open online courses under UNESCO Open Education for Better World projects. First is on digitalization as innovative pedagogy based on cognitive protocols. And the second one is on digital pedagogy integrating feedback based on e-assessment. And the next is technology-driven approaches in the development of collaborative learning and techno-pedagogical skills for sustainable development. Ma'am is really very much tech savvy, and she has also signed an MOU for her college for OERU Outreach Partnership Program with Dr. Vaine McNaught, Director, UNESCO, ICD Chair on OER, New Zealand, and list is really long. She completed various degrees, MA Psychology, PG Diploma in Counseling and Behavior, certificate course of Learning Disability, and MEd, MPhil in Chemistry, MPhil in Education, and so on. And she is expert in various ICT tools like Google Doc, Google Drive, all Google tools, survey tools like Poll Everywhere, Socrates, Mind Mapping, Interactive Board, and so on. And she also developed e-content on various topics, and she attended various national, international workshops, seminars, and conferences, and also delivered lectures in different reputed institutions and workshops, seminars, and conferences. And really, ma'am, it is so long. She published 2 books and 6 papers in edited books, and 28 papers published at international and national level in different reputed journals. She is member of various committees in her college and organized various programs in her college. Thank you so much, ma'am, for being with us today. And I welcome you on the behalf of College of Education and MMPG College. Thank you so much for accepting our request, and we are really feeling honored to have you with us. Thank you so much for joining us. Thank you for your nice introduction. So today the topic that you have given me is inclusive pedagogy and diversity in the classroom. And this topic itself is, so big. So we can cover a lot of things in different manner, and we can understand this topic in different manner at the same time. So for proceeding further, first of all, let me share my screen. And in the meantime, Kavita ma'am, tell me my voice is audible? It is clearly audible, ma'am. Yes. Yeah, thank you very much. My screen is visible? My screen is visible, ma'am? Yes, ma'am. Okay. So our today topic is inclusive pedagogy and diversity in the class. So we will discover this topic in a participatory manner in 3 aspects. First of all, I'll tell you what is diversity and how we can sustain diversity in our classroom and out of classroom, obviously. And then what is inclusive pedagogy and how we can, use different kinds of pedagogy in our classroom in an inclusive manner. And what are the various assistive devices that we can use to assist each and every child. And after that, with the help of some examples. So let me proceed further. Diversity and inclusive education. So first of all, can you tell me what you think from this particular topic? Any one of you, please. The topic is inclusive pedagogy and diversity in classroom. Can any one of you please tell me what is this includes diversity and inclusive education?
Any one of you? I request the participants to please interact, make the Yes. session interactive. I think then that will be, more understandable on the part of you as well as me, that kitna aap jante hain, kitna nahi. So, Kavita ma'am, tell me which language I have to use, like English, Hindi, or in Bilingual. You can use bilingual, ma'am. Okay, right. Yeah, please tell anyone. You can speak in Hindi also. There are two simple words: diversity and inclusive education. We all know, we are teachers. Okay. We all are aware of these two words. Then just tell me, what is diversity? Okay, in a layman language, just tell me, what is diversity? Diverse means, what is diverse? You can write, in fact, if you are unable to speak. Actually, we have students in our class from different backgrounds, different cultures, different languages. So, Okay. this is, So, well, I mean, ma'am has diversity. given the answer. No, it's okay. Thank you. So, diversity itself means that we have diverse group in the class, right? So, how we can maintain that diversity in the classroom so as to benefit each and every child in learning, so as to get maximum output from their learning, right? So it's time for the parents as well as the teachers to teach our young people, to teach our children from the very beginning on that note, to tell about the beauty and the strength of diversity, right? Means कई बार हम करते हैं ना क्लास में, आपने भी देखा होगा, आप कहते हैं अपने टीचर्स को, मैम बहुत बोर हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, इस क्लास में जाने का मन नहीं है. Sometimes people always used to this thing. So why this kind of inflammation is there? And sometimes we are very eager to learn a particular kind of topic of a particular teacher. What is behind that? So, see, we all are human beings. तो अगर हम एक ही काम को बार बार रिपीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रिजिडिटी और एक कहीं ना कहीं एक मोनोटनस जो है वो आ जाती है. तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें डाइवर्स एस्पेक्ट्स को बाय द टीचर क्लासरूम में यूज करना है. वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया जिसमें मैं बात कर रही हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज डाइवर्सिटी हियर, व्हाट वी आर कंसर्न्ड. Basically, it is the state of having pupils that have different races, different cultures that form a group, right? Sometimes they form a permanent group, sometimes they form a temporary group. It depends. So it is the quality or the state of having many different forms, many different types, and many different ideas. It is the condition of having or being composed of different elements. Which kind of elements? Variety, especially the inclusion of different types of people, as well as different types of, races and culture. Globally, you can say that in a group or in an organization. So what is diversity? Diversity is a multi-dimensional, broadly inclusive concept that acknowledges and embraces the richness of human differences, as you saw in this particular picture. Okay? So do you unable to understand now? Do you able to understand now? Yes. Tell me, please. Yes, Yeah. ma'am. Yes. Okay. So different people, diverse groups includes the following aspects. See, this slide. Their thinking style, their language style, their ethnicity, their religion, their nationality, their experiences, perspectives, job level, gender, races, physical abilities, as well as disabilities, or you can say the different abilities, their culture, their sexual orientations, their skills, their age, right? So the concept of diversity includes the acceptance and respect of every citizen, of every individual. It means understanding that each individual is unique and recognizing
are individual differences. If you are a student of B.Ed, then you have a topic of individual differences in second unit of first paper, childhood and growing up, right? So this is for your just knowledge. So it is about understanding each other and moving beyond simple tolerance to embracing and celebrating the rich dimensions of diversity contained within each individual. So what is your perspective in that? We have a model here, London's diversity wheel. If you will check your internet, you can find that. This is a wonderful model that includes all the dimensions in which we are diverse in China. That includes race, ethnicity, gender, sexual orientation, socioeconomic status, age, physical abilities, religious beliefs, political beliefs, or other ideas. So the exploration of these differences in a safe, positive, and nurturing environment includes how to include all in that group, right? So for that, what we have to do? So we have a difference here. Why I have written this in a bracket? Can anybody tell me? Abilities or versus disabilities? Can you explain? Anyone, please? Okay. Anyone of you tell me what are your abilities? Ma'am told me that students are here in this group, right? No, ma'am, all are teachers. Okay. Anyway, then also you can tell me what is the difference between abilities and disabilities? Ma'am, for example, we are able to speak. This is our ability, and someone that is not able to speak Is disabled. Right. I think. Right. You can say that here we mean each and every child, whatever the potential, whatever the abilities, whatever the disabilities they have within. So we have to tackle down all in our class in a simple manner. So here is a jar. So what we have to do to label versus not to label. So this is a wonderful concept that first you have to understand, right? Sometimes in general, you can say that in general, friends, whatever they do, they just make very kind of different labels among their friends. Sometimes they said that like ye mota hai ya ye patla hai na, kind of, or any other kind of label. तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? What we have to do in that case means क्या हमें pupils को label करना चाहिए या नहीं? This is a big question. नहीं करना चाहिए, because कहीं ना कहीं ये उनकी इंडिविजुअलिटी को अफेक्ट करता है और वो उनकी पर्सनैलिटी को डिटीरियोरेट करता है. तो फर्स्ट इज अ पर्सन. So here I have a step-wise explanation. First is disabled to abled needs. हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. Disabled children. Disabled word now pronounced as differently abled or disyang. Why? Because disabled, this itself says that they are not able, right? So second फिर आया इसके बाद children with disabilities, इसको भी modify किया गया. फिर आया children with exceptional needs or special needs or educational needs. Then the word comes children with additional needs, right? Yes, children with additional needs. So what we have to do? We can't label a child with the kind of their disability, you can say that, with the kind of their disabilities they have with them. Some people have reading disability, writing disability, or there are many disabilities, but we can't label a child with their name, with their disability. Okay. Then what we have to do? Should a child suspected or diagnosed with a developmental issue be labeled? Now again the question mark. Means if a child is diagnosed with a specific kind of disability, should it be labeled or not? Again the question mark. See, special needs or additional needs includes
Access means what we have to do for them, or deficit means something they are deficit of that. So what we have to do? We have to access their needs, whatever they need in a class, in a regular class, right? So we need not to work on the deficit aspect, or you can say that sometimes हम कहते हैं ना कि बहाने ढूंढ लेते हैं या बच्चे को कहते हैं नहीं नहीं आप ये कुछ नहीं कर सकते आपके लिए नहीं है. So we can't label these kind of things in a class basically. So the categories of learners with special educational needs include learners who are gifted and talented, learners with difficulty, who have difficulty in seeing, who have difficulty in hearing, as ma'am told, learners who have difficulty in communicating with others, as in a regular way also. For example, I'm asking a question to you, but you are not speaking. You are not, because everybody has their own personality, kind of introvert, extrovert, or ambivert, right? So similarly, the learners with special needs, the different needs, they have different kind of, abilities within them, or you can say that the different abilities within them. So the learners with difficulty in walking, moving, learners with difficulty in remembering and focusing, and learners with difficulty with self-care. So these all are the kind of educational needs that we have to think about. So here I will not focus on one by one individual needs. I will talk in general because it's a very broad topic. So I just include all the major aspects that you have to think about. Basically, I have to trigger you. So the impact of what is the then impact of diversity in education? What is the impact? So diversity is basically a topic that comes up, time to time and again when we're discussing the state of education and ever increasing diversity in our schools and communities, right? But are the demographics of our nation really so different from what they were 20 years ago? Or are we just becoming more aware of other cultures as technology brings the global community into our home? So in that case, in which way you can use technology to give more benefits to learners? Have you ever used that in your class? Tell me. Have you ever used these kind of assistive technological devices in your class or not? Not yet, ma'am. Okay. So we are moving towards a society in which individuality is retained and valued at any cost, and a cultural mosaic is created from millions of unique faces. So what we have to do? In recent years, there has been much research on diversity and its impact on students. So as I'm talking about our education, so here are, some of the impact of diversity in education is as follows. Diversity contributes into institutions characterized as a high expectation, belief in students' capabilities, capacity, models of success, institutional mission, link between the value of education and service to large communities. And then campus climate, campus conditions, whatever the facilities you are providing to your students related to the issues that we have discussed before, and the efforts to enhance access and equity on schools as a individual basis. Being a teacher means what is your responsibility to bring equity among students or equality among students. I will tell you what is the difference between equity and equality also, and how you can develop cognitive or critical thinking, problem solving capacities among all the students by including all in that diverse group. So for that, diversity may be the hardest thing for a society to live with, and perhaps the most dangerous thing for a society to be without. Because if I'm talking about a day-to-day basis, as ma'am told कि हम क्लास में ऐसी टेक्निक्स यूज नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, बेसिकली करना भी चाहे तो नहीं करते हैं. Sometimes we don't know, and sometimes we don't, we are not in the condition to explore. So being a teacher, how you can address that diversity, and what are the various approaches in addressing diversity in education? Because John F. Kennedy said that if we cannot know
And the difference is at least we can help make the world safe from food diversity. So what we usually see in our classroom. Okay. आप बताइए पहले मुझे, मैं आपको स्लाइड शो नहीं कर, आप क्लास में अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को क्या करते हुए देखते हैं इन जनरल? Just tell me one or two things. What you are asking, ma'am? What we usually see, every class has, like, let me tell you in another manner. What are the various different abilities? For example, you are teaching a particular kind of students, for example, per se, like 6 class of students, right? And you have a group of 30 students in your class. Then how you judge in a particular child that you have this particular ability, you know, you have this particular child has a musical ability, this particular child has a kinesthetic ability, this particular child has a, you can say that the academic ability. Yeah. Yes. कैसे पता करते हैं, कैसे पता करते हैं क्लास में? डिफरेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराते हैं, लाइक अगर कोई एथलेटिक मीट कराई तो स्पोर्ट्स में कौन अच्छा है, डिबेट कंपटीशन कराया तो किसकी क्वालिटी वो है, इस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करा के हम पता लगा सकते हैं. वेरी गुड, यस. तो हम डाइवर्स ग्रुप मेंटेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर यू नो रिस्पॉन्स इन द क्लास, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ and the teacher, you know, finds out different kind of capable groups on the basis of their abilities, like the queen bee, the sketcher, in love couple, singers, coping machines, sports guys. So these are the children, you can say that the abilities that we explore being a teacher. Back of class crew, musicians, hyperactive, right? Stressed out, in stress. So these all are the abilities. Sports guy, as ma'am told, gossiping machines. There are 2 students who are gossiping, right? So class, bunkers, and many more. So these all are the, sometimes we specify that. कोई हमारे पास एक टास्क होता है, हम कहते हैं कि yes, ये टास्क हम इस बच्चे को दे देते हैं करने के लिए. How you find that? On the basis of their activities, on the basis of your judgment, and the judgment will be based on your day-to-day activities, right? So being a teacher, it's a responsibility to think in that manner, right? Then what intelligences actually they retain within them? In psychology, we have a model with the name of, you can say that the theory, Gardner theory of multiple intelligence, in which we have to coordinate different abilities within them, like interpersonal. Some people are, you know, very extrovert to talk to others. They are very interpersonal, intrapersonal within. You know, you can say that they are very introvert. They don't talk to others so much. Then bodily kinesthetics, you can say that sports person is there, and musical abilities, musical person is there. Then logical, mathematical reasoning is there. Verbal linguistic abilities, इनकी verbal skills बहुत अच्छी होती है. Naturalists who are very, you know, prone to nature, and then visual and spatial ability who have, you can say that spatial abilities, like अगर कोई मैप को यूज करता है, आप कहते हैं ना कि नहीं मुझे इसको यूज करना नहीं आता, ये बहुत अच्छे से यूज करता है. So these all are the abilities that can be judged in a, you know, in a class, in a diverse group. So then, what are my responsibilities in terms of addressing my student needs? For example, you have a student who is very good in musical ability, then what are your responsibilities for that particular child? And next question is, how do I cope with the broad range of differences between my students or not? And what support is out there for me? What do we mean by diversity, basically? So being individual, being teacher, हम उनको क्या provide करवाते हैं, क्या नहीं करवाते हैं? This is my address for diversity. Here, studies and researches. There is some, you know, research base I have put here. Studies and researches are some of the major approaches that are being done in order to address diversity in education. So these procedures, problems related to diversity are being addressed.
remedied, and are provided with a wide range of solutions that would dynamically and flexibly handle such diverse situations. Today, in general education, classrooms are being more and more diverse, with both from the point of the students with disabilities and students from cultural and linguistic backgrounds. In order for teachers to effectively teach a classroom of diverse students, meeting each student's needs individually and successfully, effective research-based strategies must be implemented. And some of the strategies are like acknowledging students' differences, as I show you in this slide. Then connecting with students' families. Obviously, you have to talk with them. You have to, the kind of, you can say that the discussion with their home group, so that you came to know about their strengths in detail, as well as, you have a better kind of known aspects of that particular child. Then establishing student-wide cultural collaboration, then implementing culturally responsive teaching, establishing mentors for students, right? So these strategies, when implemented in the classroom, at the school level, and out of school level, can positively affect each student, both academically and behaviorally, in inclusive class. Then what is the role of education in addressing issues of diversity? See, we can apply different kind of strategies to handle these students. I will discuss later on. There is collaborative teaching for that, cooperative teaching. In cooperative teaching, you can apply different strategies, Diksha technique, relay coach, think, peer, share, think, peer, share. Then many more strategies are there. I will discuss one by one, few of them. Number head together. A number of strategies are there which you can apply for your students, but that I will tell you later on. So as young children start to recognize human differences, teachers can help them develop a foundation of respect and inclusion. What are the best practices to be implemented in an intercultural approach, and what is the mode of education to mold these children on how to react on these differences? For that, you have to discuss each and every detail with your colleagues, with their parents, so that you came to know their strengths and weaknesses in a detailed manner. So this is called as the diversity agenda, basically, in education, that sets out to address issues that lead to inequalities in practice. It has its roots in the legal framework that underpins the provision of equal opportunities, and which acknowledges that our social identity impacts on life experiences and opportunities. So equality aims to create a fairer society where all can participate and have the opportunity to fulfill their potential. And for fulfilling their potential, what a teacher needs to do? Teacher must be aware of diversified issues that relate to quality teaching practice, benefits from community, law, equal opportunities, human rights, and education. In order to address diverse principles and approaches, teachers also need to know how to design, deliver, and evaluate learning opportunities to help meet the needs of a diverse student body. For example, different cultures have different understandings of the role of teachers and other students, with expectations differing accordingly. Students who hold very strong views about race, politics, religion, or sexuality may find it different to cope with an objective, open discussion, or with students who hold opposing views. So, here is again a diagram that you can understand better. It's a phrase basically. When Kelvin asks a question, the teacher asks a question. You have a question, Kelvin? Yes, ma'am. But assurance do I have that the education is adequately preparing for 21st century? Am I getting the skills I will need to effectively compete in a tough global economy? I want a high-paying job. When I get out of here, I want opportunity. Can I get that? In that case, the teacher replies, in that case, yes, ma'am, I suggest you
to start working harder. What you get out of school depends on what you can put into it. Oh, then forget it. Means the child say, I can't do that. See, it is not only the responsibility of the student, but how you can provide that kind of the scenario or the situation to students, that is more complicated. You know, being a teacher, your responsibility is much harder. So here I'm showing you what are the different types of teachers. As I already told you some of them, the 10 different type of teachers are here. Number one is the strict one. The teachers are hardcore about their job. They don't smile at all. One mistake and boom, and you will end up being screwed. Now you have to tell me which kind of teachers after my lecture, right? The I don't give a damn about your life teacher. These teachers just don't give a damn about you and your life. Means they don't bother their children. You know, they like to give tons of homework and projects, but they themselves don't do any kind of hard. You know, वो अपने एक रेस्ट स्ट्रीम कॉमन फ्रेम से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं. उनको लगता है नहीं काम तो चल ही रहा है, क्या जरूरत है. So you have to think whatever we are, can we do the kind of justice with our students in the present scenario in which we are working, in which we are living, in which we are, you know, dealing with diverse kind of groups. Then comedian. These teachers are one of the best teachers. They turn in the class into a stand-up comedy bar. You laugh and laugh, but actually don't forget about the lesson. The new teacher. These teachers are still new to the game. Yes, and very, very nice. Later in their life, they will be consumed by the reality of being a teacher. Next, the almost retired teacher. The teachers are a year away from retirement. The talk show queen king teacher. They are like the opera of a classroom. They talk about something they are not related to the lessons at all. Means क्लास में पढ़ाएंगे तो बात तो करेंगे, बट क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ एंड करेंगे, द स्टूडेंट्स डोंट नो एग्जैक्टली. सी, नॉलेज एक टीचर को होना अलग बात है, बट स्टूडेंट्स को आप कितना सेटिस्फाई करवा पाते हो या उनको उनके करिकुलम के अकॉर्डिंग कितना डीपली और इफेक्टिव टेक्निक्स के द्वारा पढ़ा पाते हो, that matters actually. So the teacher that tries too hard to be cool means these teachers act as if they are cool, it's not so cool moves that they think they are cool. The cool teacher everyone loves. Yes. These teachers get to have the most cards and gifts during Christmas and Teachers' Day. So the MMK teachers, these teachers talk about themselves, about how awesome or awful their lives are. They talk about the decisions in life that matters to them and why you should follow. Means you have to behave like your teacher, and they just give, the kind of thinking pattern that why you need to follow that or not. So almost in time teachers, these teachers are always here. So it's a general pattern I told you basically. So you have to think which kind of teacher you are. So we have work to do. Which kind of work we have to do basically. So here we have to work upon how to teach, why to teach, and which kind of people we need to teach, and how we have to amalgamate of, you can say that, the kind of teaching, the kind of pedagogy, and the kind of techno-pedagogy, basically, right? So now our second concept that comes, what is inclusive pedagogy? Before proceeding further of inclusive pedagogy, can anybody tell me what is pedagogy and why we need that? Very simple question. You all know. Yes, please. Science of teaching? Yeah. Obviously, the science of teaching means, and what is inclusive pedagogy? To include each and everyone. For that, what we need to do?
why the word pedagogy comes here? पढ़ाते तो हम पहले भी थे, skills पहले भी थी, teaching methods पहले भी थे, अभी आजकल हम सब बहुत बात कर रहे हैं innovative pedagogy, critical pedagogy, inclusive pedagogy, then heutagogy, andragogy, pedagogy. Why? क्यों कर रहे हैं? इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि we have different diverse group in the class and we have to include each and every child by making inclusive pedagogy in different aspects, means in 4 aspects. Means what are your objectives? Objectives क्यों बनाएंगे? क्यों बनाते हैं हम आजकल क्लास में? क्योंकि हमारा फोकस किस पे है? हमारा सेंट्रल फोकस किस पे? हमारे स्टूडेंट्स पे। तो क्लास में किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमें कैसे ऑब्जेक्टिव्स है बनाने हैं, क्या हमारा कंटेंट है। सेकंड, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हमारे पास डाइवर्स ग्रुप है तो हमें उन स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस को कैसे फोकस करना है, राइट? फोकस ऑन टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस बेसिकली दैट आर एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी चाइल्ड। चाहे फिर उसके लिए आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनानी पड़े, रेमेडियल टीचिंग देनी पड़े, ट्यूटोरियल सेशंस लेने पड़े, या फिर उसी पैरामीटर में अपनी सारी मैथोलॉजी को अप्लाई करना पड़े, या कोलैबोरेटिव टीचिंग करनी पड़े। मींस एक क्लास में 3 or 4 टीचर्स हैं, right? Then one teacher teaches, then the second teacher is more capable to understand the kind of teacher, like the child who is hearing impaired, then you have to teach them in a kind of in a different manner and all. So that you have to plan basically. जब प्लानिंग अच्छी होगी, मैथोलॉजी प्लान अच्छा होगा, तभी हमारी इवैल्यूएशन 4th aspect अच्छा है, राइट? सो for that we have to increase opportunities for students to be more interactive and actively participate in education, right? So here is the definition, more comprehensive. Inclusive pedagogy that includes all the aspects. Which kind of? Biological, obviously, जो मैंने अभी बताया कि हम कैसे दिखते हैं, क्या हमारे अंदर कमी है। Then social, सामाजिक, and third is very very important, psychological, जो जनरली हम इग्नोर करते हैं। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का इंक्लूड होना बहुत जरूरी है, और इसके इंक्लूड होने के लिए आपको सबसे पहले साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, राइट? देन फिर इन तीनों का कनेक्शन कैसे, कब, किस तरह से करना है, ये आपको पता होगा। तो डिफाइनिंग इंक्लूसिव पेडागोजी अगेन इंक्लूड्स बिलोंगिंग इज क्रिटिकल टू वेलबीइंग, ऑब्वियसली मींस हमें उनकी वेलबींग के लिए काम करना है, तो हमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजीज को प्लान करना, राइट? प्लेसेस नॉट ओनली फील्ड प्ले रोल इन फीडिंग कनेक्टेड, यस ऑब्वियसली, वेयर यू आर, हाउ यू वर्क विद स्टूडेंट्स। जरूरी नहीं है कि आप क्लासरूम में ही वर्क करो, आजकल तो हम 24/7 कनेक्टेड हैं, बट फिर उनके लिए वहां पे हमें किस तरह की स्पेस क्रिएट करनी है, कैसे क्लासरूम में स्ट्रेटेजीज प्लान करनी है, दैट इंक्लूसिव pedagogy means using teaching practices that to create space for belonging in the class. Outcomes of inclusive pedagogy includes inclusive class-based benefit to students, promotes academic success and better learning outcomes, and sense of belonging. See, there is a word, one word is sense of belonging, another word is sense of coherence. Can you tell me what is the difference between the words, or is it same? These days we are working on sense of belonging or sense of coherence. Why it is essential? See, sense of coherence is the, we can say that scientific name of sense of belonging, which means we have to work in a coherent manner. Means each and every child is important, and we need to break them. We need to, work upon their individuality so that we can save them from being torn into different aspects in a different manner, into pieces, you can say. So sense of belonging positively associated with academic efficacy and intrinsic motivation. See, sometimes हम कहते हैं ना कि बच्चे के अंदर भी जैसे भी कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा, या उस बच्चे के अंदर क्लासरूम में जैसे आप पढ़ा रहे हो क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा, तो उसके अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं है। तो
हमें इसके लिए काम करना है कि हमें बच्चे को इन स्पाइट ऑफ सो मेनी डिफरेंट एबिलिटीज वी हैव टू थिंक ऑन देयर हाउ वी कैन provoke their intrinsic motivation. That is our outcome you can. So inclusive pedagogy can aid in academic success of all students, not anyone. So we all use inclusive practices here. All using inclusive practices and teaching includes pronouncing names. This is the first aspect of it. See, I saw many teachers ask them by their, yes, aap khade huiye, yeah, red shirt, blue shirt, right? Or you can say that the roll number is this. The first is the identity. Means you have to recall the name of each and every child in your class so that to make them special, right? Then multiple opportunities for engagement. I'll tell you a simple, very common strategy that you can use in your class. For example, the first day of your class is the orientation, right? And then obviously all the teachers use the strategies that give the introduction. स्टूडेंट से नेम पूछते हैं, है ना? उसके बाद एक को खड़ा करते हैं, फिर बिठाते हैं। इसकी बजाय आप एक बड़ा सा सर्कल बना लीजिए। बहुत ही सिंपल सा आपको टास्क बताती हूँ। एक बड़ा सा सर्कल बना लीजिए, जितने भी आपकी क्लासेस 10 है, और आप सेंटर में खड़े हो। आप किसी भी एक कोने से बच्चों के नाम पूछने शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, इस एक्सरसाइज से आपको भी नाम याद हो जाएंगे फर्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स के, और स्टूडेंट्स को भी इंटरेक्शन अच्छा लगेगा और कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं लगेगा। तो आप एक जगह से स्टूडेंट्स के नाम पूछने स्टार्ट कीजिए। 3 से पूछ लीजिए, 4 से पूछ लीजिए, फिर किसी बच्चे को रैंडमली बोलिए कि आप इनके नाम सीखना है, बताइए। तो ऐसा आप रेगुलरली करते जाइए, फिर उनका प्लेस चेंज कर दीजिए। तो द होल पीरियड यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। सी, आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड स्टूडेंट्स के अंदर एक तो बहुत अच्छा एक मोटिवेशन आ जाता है, वो कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि अगर शुरुआत में आपने कनेक्शन अच्छा बना दिया, आप बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। बिकॉज आजकल हम किस पे बिलीव करते हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग में बिलीव करते हैं, कॉम्पिटिटिव में नहीं। तो ये फर्स्ट एक रूल आप अपनी क्लास में करके देखिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, आपको भी अच्छा लगेगा एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो फील कनेक्टेड, राइट? तो एक अपॉर्चुनिटी मैंने बता दी कि कैसे आपने उनको एंगेज करना है क्लास में। देन ऑब्वियसली असाइनमेंट वेराइटी। आप असाइनमेंट देते हैं, आप जनरली क्या करते हैं कि हम पेजेस पे कह देते हैं जी ये क्वेश्चन बना के ले आ। नो, you have to assign different tasks in a combined manner. What I do in my class, मैं जनरली कोई एक टॉपिक पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं अपनी क्लास में 4-4-5 स्टूडेंट्स से अकॉर्डिंग टू देयर, उनको चॉइस, उनको फ्रीडम पूरा मिलता है कि आप अपना ग्रुप खुद बना लीजिए। अदरवाइज हिंदी इंग्लिश के हिसाब से आपके पास दोनों होते हैं, मैं उनके ग्रुप्स बना। ग्रुप बनाने के बाद उनको आइडियाज, सिर्फ प्रॉम्प्टिंग देती हूँ मैं, कुछ नहीं, उनको आइडियाज देती हूँ कि आपको ऐसे ऐसे करना है और ये बना। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इतने अच्छे अच्छे असाइनमेंट डिफरेंट तरीके से बना के लाते हैं। वो ऑनलाइन कोलैबोरेशन करते हैं, टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जबकि उनके पास लैपटॉप भी नहीं होते, क्योंकि मैं रूरल एरिया में वर्क करती हूँ, तो वो मोबाइल से ही बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। तो जबकि मैंने उनको इतना मीन्स मैं एक एक स्टूडेंट को नहीं बताती हूँ, बट हम एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें अगर उनको जहाँ भी कोई कमी नजर आती है, जहाँ भी वो अटकते हैं, आई विल गाइड। तो आप ये कर सकते हैं जिससे कि आपके पास वेराइटी निकल के आएगी स्टूडेंट्स की, और वो अपने माइंड सेट के साथ बहुत अच्छा काम। लेट्स सपोज एक सिंपल सा टास्क बता, फॉर एग्जांपल आपने क्लास में टॉपिक पढ़ाया पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल्स का आपने टॉपिक पढ़ाया। देयर आर 4 और 5 काइंड्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। कई बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इंटेलिजेंट पेरेंट्स, ऑटोक्रेटिक पेरेंट्स, डेमोक्रेटिक पेरेंट्स, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, बहुत सारे। तो आपने कंसेप्ट पढ़ाया और आपने उनको बोला कि आपको एक एग्जाम्पल लेके आना है। घर एक ही फैमिली है, तो आप अपने बचपन के कोई भी स्टाइल को सोचिए, या अपने फ्रेंड की या किसी की भी सिचुएशन को लेकर आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी। तो स्टोरी क्रिएट करके आप आइए, उसके बाद आपको स्टोरी को रिकॉर्ड करना है, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, या ऑडियो रिकॉर्ड करना है, या वीडियो रिकॉर्ड करना है। सबके पास मोबाइल है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब ऐसे छोटे छोटे टास्क हो सकते हैं, उनको मोटिवेशन, जिससे कि वो अपने आप को इंक्लूडेड महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर जो हेजिटेशन है वो रिमूव होती चली जाती है। दैट वी कैन डू। छोटे छोटे टास्क करने, बहुत बड़ा काम नहीं करना, बहुत हटके नहीं करना। अगर हम ये सब करेंगे तो हम
सभी को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी क्लास में, एंड स्टूडेंट्स फील एक्साइटेड, यू नो, वो आपके लेक्चर का वेट करेंगे कि हमें आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, राइट? मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, कई बार बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम आज आप क्या नया बताएंगे। तो आपको इस तरह का माहौल अपनी क्लास में लाना है। तो आप छोटी छोटी प्रैक्टिस से ला सकते हैं, और आप देखेंगे बच्चे आपसे, स्टूडेंट्स आपसे ज्यादा जानते हैं। अगर आप थोड़ा सा उनको मोटिवेट करेंगे, वो बहुत ज्यादा अच्छे से करेंगे, राइट? So we all can improve our inclusive practices by doing, all work in progress in a combined manner, continuous growth. We are all but what we need to do, we have to work upon in that direction. कि कहाँ पे वो biasness है, कैसे हमने उसको remove कर। So we all make mistakes and offend students, but कैसे करना है, ये टेक्निक आपको चेंज करना, राइट? सो दैट वो भी उनको एक पॉजिटिव reinforcement ही लगे। Think of a time when you made a student feel excluded from the group. Can you give me an example? कभी भी किसी ने भी, या किसी और का एग्जाम्पल जहाँ पे किसी स्टूडेंट को एक्सक्लूडेड फील हुआ हो, नॉट ओनली कोर्स, फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द कॉलेज, एनी सिचुएशन you can think and you have to tell me after the lecture. Just note it down. Sometimes we are gender biased. Oh yes, in Haryana it is. Yes. You can, yes, bilkul. And there are many situations in fact for that. Right. यहाँ तक क्लियर हुआ? तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो हम आजकल बहुत बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इंक्लूसिविटी। तो माय टॉपिक इज हियर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इंक्लूसिविटी। सी एनईपी ने इस पे बहुत काम किया है, कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? बेसिकली इन्होंने क्या बोला है कि एनईपी 2020 जो डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है दैट लेज द फाउंडेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने एजुकेशन में एक तो बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दी, मीन्स आप एक साथ मल्टीपल कोर्सेज एक रेगुलर में और दूसरा डिस्टेंस में कर सकते हैं, पहली बात तो है ना, जिससे कि क्या है, हम स्किल्ड वर्कर्स को जो है कह रहे हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन, उसको हम बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं, घर बैठे ही बहुत चीजें सीख सकते हैं। इट रिकॉग्नाइजेस दैट नीड टू एलिमिनेट डिस्पैरिटीज एंड इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। द एनईपी 2020 प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुला ऑब्वियसली, एंड जो बहुत अच्छा काम इसमें हुआ है दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मीन्स नाउ जो साइंस स्टूडेंट है वो साइंस पे लिमिटेड नहीं है, वो आर्ट्स स्टूडेंट है वो आर्ट्स पे लिमिटेड नहीं, राइट? You can simultaneously work in different groups, in different courses that combined, you can say that psychology with physics, psychology with chemistry, and anything else. And obviously skill based education, whatever the skills you have to enhance that in different ways, ensuring that students diverse talents are nurtured. So अब उनके डाइवर्स टैलेंट्स को पहचानने की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट उनको एक राइट पाथ दें ताकि वो उस डायरेक्शन में अच्छे से वर्क करें। फॉर एग्जाम्पल, द एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन encourages that not all students have the same academic inclinations, promoting inclusivity in different career pathways, you can say. And for that, what are the various principles of inclusive pedagogy in NEP 2020? Number one is flexible learning path. As I already told you, students can choose subjects aligned with their interests, allowing for personalized learning journey. Then reduction of curriculum load. कोई लोड ही नहीं, you can manage and balance your curriculum by creating catering different learning spaces. And here we work on holistic assessment. Third principle of inclusive pedagogy का क्या है यहाँ पे? Holistic assessment means assessments that are focused on a comprehensive understanding of subjects rather than rote memorization, right? And then multilingualism and cultural diversity, mother tongue based education, so that आपको उसको understand करने में परेशानी या problem ना, basically that can be enhanced in the early years. That gives you strength for making connections between students, the learning material, and the understanding of your space in which you are living, right? Especially that is important for linguistic diversity and all. And for that, see, this is also very important. I will show you an example. Approaches enhancing inclusivity, कौन कौन सी?
technological advancement. I will give you just an example, not many, offer tools that further enhance inclusive education. Number one, assistive technology means screen readers सबके पास है, text to speech, speech to text टूल सबके पास है, आप यूज करते हैं, गूगल डॉक का यूज करते हैं, या मोबाइल में भी आप जब डायरेक्शन देते हैं गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो बोल के सर्च कर लेते हैं ना, yes or no, please tell me. Yes please. Yes ma'am. Yeah, obviously this is very common. So अब हमें क्या करना है, इसको अपने एजुकेशन में लेके आना है, मीन स्टूडेंट्स को कुछ डॉक्यूमेंट देना है, उनको बोलना है कि इसको आपने लेट्स सपोज एक पीडीएफ दे दी, उनको बोलना है कि इसको आपको सुनना है। अब उसके लिए कौन सा टूल यूज करेंगे, उसके लिए वो अपने आप उसको समझेंगे, उस टूल को ढूंढेंगे, अपने उस टेक्स्ट को आप एक दो एग्जांपल दे सकते हैं, उस स्पीच फॉर्मेट में डालेंगे और जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं वैसे ही उस डॉक्यूमेंट को सुनेंगे। इससे क्या होगा, उनकी रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव, राइट? सो बेसिकली दैट कैन बी कैप्शन मेकिंग लर्निंग एक्सेसिबल फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। अब मान लो कोई स्टूडेंट विजुअली इम्पेयर्ड है, राइट? तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप उसको एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए, वो आराम से उसको सुनेगा, राइट? तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि उनको एक अच्छा पाथ मिले आगे बढ़ने के, राइट? बट उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अब मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रही हूँ, लिटरेट होना पड़ेगा। आप कहेंगे हम तो लिटरेट हैं, नहीं, हम लिटरेट नहीं है। अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग अपनी मैथोलॉजीज को, अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज नहीं करते हैं, या हम नहीं सीखते हैं, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप के हैं, हाँ, तो हम इलिटरेट कैटेगरी में ही आए। तो फॉर दैट यू हैव टू गो बायॉन्ड योर सेफ पाथ, यू कैन से दैट। थोड़ा सा डेंजर तो आपको उठाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा आपको आगे सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ये सिचुएशन है तो इसको मैं स्टूडेंट्स तक, हर स्टूडेंट तक कैसे पहुंचाऊं। एंड सेकंड इसमें है ऑनलाइन कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म, मींस डाइवर्स ग्रुप्स कैन कोलैबोरेट वर्चुअली। कविता मैम भी बहुत टूल्स जानते हैं, ये भी आपको बता देंगे कि वर्चुअली हमें स्पेसेस में कैसे कनेक्ट करना है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास उसके लिए, नियर पोर्ट है, मैं बेसिकली पीपीटी बनाने के लिए बता डिफरेंट, देन गूगल स्लाइड्स है, देन पैडलेट है, बहुत सारे माइंड मैपिंग टूल्स है, बहुत सारे डिफरेंट जिसको आप यूज कर सकते हैं टू मेक स्टूडेंट्स कनेक्टेड इन अ different manner. So I will show you an example. There is a software, the name of Verbella and Second Life, जिसमें हम वर्चुअली स्टूडेंट्स को कहीं विजिट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई यूनिवर्सिटी दिखानी है उनको, या आपने कोई आइलैंड दिखाना है, तो आप वो एक जैसे गेम्स खेलते हैं बच्चे, वो वहाँ पे वर्चुअली रोड पे कार जा रही है उसको देख रहे हैं सब। तो इसमें क्या है, हमने एक लेसन बनाया है इसमें वर्चुअली सेकेंड लाइफ सॉफ्टवेयर का यूज करके, जिसमें हमने स्टूडेंट्स को वर्चुअल वे में एक आइलैंड पे विजिट करवाया, और दूसरे ग्रुप को क्या किया, सिर्फ एक पीपीटी के द्वारा उनकी फोटो खींच के उसको पढ़ाया। देन व्हिच ग्रुप टुक मोर इंटरेस्ट इन योर लेसन, ऑब्वियसली जिसमें उन्होंने खुद एक्सप्लोर करा, खुद वर्चुअली उसको महसूस करके उस आइलैंड को विजिट किया। तो ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का आप यूज करके स्टूडेंट्स को बेसिकली दिस इज वेरी हेल्पफुल इन वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्योग्राफिकल एंड हिस्ट्री टॉपिक्स। तो वो स्टूडेंट्स को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ेंगे तो बहुत बोरिंग लगेगी, बट अगर हम वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करके पढ़ाएंगे तो उनको लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। आप अपनी एग्जाम्पल दें, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे भी हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता था, बट अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया होता तो शायद हमारी हिस्ट्री भी बहुत अच्छी होती। मैं अपनी बात करूँ बेसिकली, तो ऐसे ही हो सकता है किसी स्टूडेंट को मैथ्स में प्रॉब्लम हो, किसी तीसरे स्टूडेंट को साइंस में प्रॉब्लम हो, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का यूज अपने स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं डिफरेंट मैनर टू मेक देम मोर एबल टू अंडरस्टैंड द concept. Then personalized learning software, adaptive learning platforms cater to individual learning style, pacing and their preferences on the basis of their preferences. Virtual reality and augmented reality, immersive experiences offer unique perspectives and interactive learning opportunities in different times. And there, what are the assistive technologies that you can use? इसके नाम मैंने कुछ लिखे हैं, screen readers, NVDA है,
नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, ये फ्री ओपन सोर्स रीडर्स है फॉर विंडोज के लिए, जिसको आप यूज कर सकते हैं। वॉइस ओवर है, जॉज है, जॉब एक्सेस विद स्पीच, ए वाइडली यूज स्क्रीन रीडर with advanced features, you can use that also. Speech to text, voice doc, voice typing, आप सबने यूज किया होगा। गूगल डॉक पे ऊपर जाकर एक फीचर होता है जिसमें वॉइस टाइपिंग डालती है और बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसमें जाकर आप बोलते जाती है और वो डिक्टेट करता है, खुद से डिक्टेट करेंगे और खुद से लिखता जाता है, ठीक है। देन कैप्शनिंग हमारा है, उसके लिए यूट्यूब ऑटोमेटेड कैप्शंस है, जिसको आप कैप्शन फीचर का यूज करते हैं तो अपने आप एडिट होता है। तो एआई टूल्स भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बहुत सारे, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट सीइंग एआई है, एन एआई पावर्ड ऐप that narrates the word for people with visual impairment. It can read text, recognize objects and more. मैं इसको दिखाऊंगी अभी आपको। एआई टूल माइक्रोसॉफ्ट सीइंग एआई, बहुत सारे फीचर्स हैं, आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप डालेंगे ना माइक्रोसॉफ्ट सीइंग एआई तो उसमें आपको डिफरेंट फीचर्स नजर आएंगे, देखना। देन वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? पहले इसका नाम जी सूट होता था, अब इसको गूगल एक्सपीडिशंस बोलते हैं। A virtual reality teaching tool that allow educators to guide students to immersive 360 degree experiences. Means आप कोई भी मान लो कोई बिल्डिंग दिखा रहे हैं तो इसको 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं ताकि आप कंप्रीहेंसिव व्यू उनको दिखा पाए। Near 4VR that integrates virtual reality field trips and activities with interactive lessons, enabling educators to engage students with diverse learning experiences. Then Alchemy VR that provides a library of virtual reality experiences related to science, history, nature, and enhancing students' understanding through emotion. Engage offers a collaborative VR platform for education, allowing educators to create interactive lessons and experiences in VR. ऐसी augmented learning platforms हमारे पास बहुत। Number 1, metaverse that enable educators to create interactive AR experiences, scavenger hunts and quizzes, fostering engagement and learning through mobile device. Aura Sama है, now HP reveals, HP ने इसको ले लिया है basically. Actually I never used this, but मैंने metaverse का use किया है, that allow users to create and experience interactive AR content by scanning physical objects or images. You know, आपके पास virtual labs भी है। अगर आप पेट सिमुलेशन PHET सिमुलेशन डालेंगे तो आपके पास वर्चुअल लैब्स आ जाएंगी जिसमें आप 6th, 7th, 8th क्लास के स्टूडेंट्स को जो साइंस लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं वो आप वर्चुअली उनको करा सकते हैं। तो इंक्लूड है, राइट। देन ज़ैपर है, पोस्ट बेसिस एजुकेशन है जो AR VR में काम करते हैं। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट डन बाय वन ऑफ आवर बुक कोर्स ऑन कॉग्निटिव प्रोटोकॉल्स, जिसमें हमने हमारा सारा न्यूरो साइंसेस यानी कॉग्निटिव प्रोटोकॉल्स पे काम है। ये बहुत ही सिंपल सा टास्क था जो हमने किया था, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक, आपने देखा होगा यहाँ स्टूडेंट्स कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, ये स्मार्ट बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट स्कूल के ही स्टूडेंट्स हैं। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया था, उनको इन्वॉल्व करने के लिए, यानी द स्टूडेंट्स विद डाइवर्स ग्रुप, डिफरेंट बैकग्राउंड से वो थे और कई स्टूडेंट्स उसमें डिफरेंट एबिलिटीज के भी थे। तो हमने उनको क्या किया, एक सॉफ्टवेयर है pschool.in, उस पे एक एक्टिविटी उनको दी। मीन्स एक उनको 10 सेकेंड्स के लिए उनको एक पैटर्न दिखाया गया ड्रॉ करके, और उसके बाद उनको उस पैटर्न को अलग अलग स्टूडेंट्स को बुलाकर ड्रॉ करवाया। मीन्स कितना कंसंट्रेशन से वो उसको यूज करते हैं या नहीं करते। आप मानोगे नहीं, यू नो, विद इन 5 to 10 minutes जब हमने इसको 3-4 स्टूडेंट्स को करवाया, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास टुक इंटरेस्ट। और वन टाइम पहले जिन स्टूडेंट्स ने 5-5, 7-7 गलतियां करी थी, जब 2-3 टाइम्स रिपीट किया, हर स्टूडेंट ने इसको वन गो में करेक्ट पैटर्न ड्रॉ। So this is one of the, you know, things that you can use differently in your class. I'm just showing you one of the activity that we have done in our class. Secondly, what we have done, there is a software with the name of eye tracker. आपके मोबाइल में भी अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आ जाएगा। इसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट किया आई ट्रैकर में। स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय, मान लो 40 मिनट का लेक्चर है, उनके मोबाइल में आई ट्रैकर डाउनलोड करके उसको बिल्कुल आईज के पास किया, जिससे आपका आई का कंसंट्रेशन स्पैन आपको पता चलेगा कि कितना कोऑर्डिनेशन से, या जब आप पे लिख रहे
नहीं है, टीचर लिख रहा है, कितना वो देख पा रहे हैं अच्छे से, या उनका डाइवर्शन कितना है, मतलब कितना आपके लेक्चर में उनका ध्यान है या नहीं। ऐसे भी आप छोटी छोटी टेक्निक्स को अप्लाई कर अपनी रीडिंग स्किल्स को क्लास में स्टूडेंट्स के द्वारा इम्प्रूव करवा सकते हैं। तो ये सारी उनकी रीडिंग्स है आई की, कि कैसे उनकी मूवमेंट्स रही, साइड मूवमेंट भी है, सेंट्रली अलाइंड भी है, बैक भी है, बहुत सारे रिजल्ट इसमें हैं। तो इसको इंटरप्रेट करके हमने कुछ रिजल्ट भी निकाले कुछ स्टूडेंट्स के, एंड ऑब्वियसली दे टुक मोर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द डे. So these are the some of the things that I have done with my students, and many more also, but I don't have time right now. So let me come the another aspect. Inclusive pedagogy development process क्या होगा? Means and outgoing mindset, यानी मैंने अभी बात करी कि कैसे हमारा माइंडसेट होता है, कैसे हम काम को आगे बढ़ाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या रिफ्लेक्शन मिलता है ना? तो सबसे पहले इंक्लूसिव पेडागोजी डेवलपमेंट प्रोसेस में है क्या? मींस बिफोर कोर्स, और यू कैन से दैट बिफोर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है? डिजाइन करना है एंड डेवलप करना है. क्रिएट कोर्स विद इंक्लूजन प्रिंसिपल्स इन माइंड, राइट? मींस आपको पहले हर इन प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए ही उसको डिजाइन करना. अपडेट कोर्स बेस्ड ऑन प्रीवियस फीडबैक, माइंडफुलनेस ऑफ स्टूडेंट पॉपुलेशन, ऑब्वियसली उनको स्टूडेंट्स को जरूर ध्यान में रखना है कि कौन से ग्रुप से हम उसको कंडक्ट करें. देन आपको अपने टीचर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ भी कंसल्ट करना है बिफोर डिजाइन ये पर्टिकुलर कोर्स, कि विच थिंग्स टू बी इंक्लूडेड एंड विच थिंग्स नॉट टू बी इंक्लूडेड. देन इम्प्लीमेंट course in session, implement course techniques, allow for outgoing feedback to determine and improve classroom inclusion and all that. And after that means implement करते समय आपको time to time कैसे आप improve कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको अपनी इस एग्जाम्पल में बताया कि जब हमने स्टार्टिंग में किया तो स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा जो है डाइवर्शन आ रहे थे. मीन्स बैक बेंचर्स तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, बट जब हमने उनको थोड़ा मोटिवेट किया है ना, तो सभी स्टूडेंट्स ने क्लास में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया. एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज डन बाय सम ऑफ माय स्टूडेंट्स आल्सो. उन्होंने बोला कि हमने उनको कुछ लेसन पढ़ाने के बाद कुछ ऑनलाइन इवैल्यूएशन टेक्निक्स अप्लाई करी, एंड एवरीबॉडी पार्टिसिपेटेड वेरी वेल. और उनको इमीडिएट फीडबैक जब मिला तो ऑब्वियसली उनके रिजल्ट्स में भी बहुत इंप्रूवमेंट आया. So these all are, and then evaluation and reflect means after the course, then final feedback लेते समय कैसे रिफ्लेक्शन लेना है, कैसे इम्प्रूव करना है अपने कोर्स को इंक्लूसिव पैरामीटर्स पे, ये सब आपको एट द लास्ट ध्यान. तो डिजाइन एंड डेवलप, जिसमें आपको यूनिवर्सल डिजाइन यूडीएल है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, या एक और मॉडल है यूनिवर्सल डिजाइन का जिसको आप, और हमारे पास और भी बहुत सारे मॉडल हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हो. एडी मॉडल भी है, यूनिवर्सल डिजाइन वाला तो है ये दूसरा. देन आपके पास टेक्नो पेडागोजिकल के भी बहुत सारे मॉडल्स हैं. टीपैक मॉडल है, समर मॉडल है, रैट मॉडल है, पिक रैट मॉडल है. आप कोई भी मॉडल इसमें यूज कर सकते हो जब आप इंक्लूसिव पेडागोजी की बात करें. ठीक है. देन यहाँ पे मॉडल्स की ही कुछ बात की. देन इम्प्लीमेंटेशन में किन चीजों का ध्यान रखना है ये मैंने आपको बता दिया. मतलब विजुअल मीडिया कौन सा है, ऑडियो मीडिया कौन सा है, इन सब चीजों का आपको इसमें ध्यान रखना. देन इवेल्युएट एंड रिफ्लेक्ट. स्मॉल focus group है या big focus group है, that depends upon means how you can do both, right? Then after discussing with these models, you have to implement different kind of things with visual media, with audio media, by showing videos, by showing audios, by giving content in PPT mode and many other things. And the last one is the evaluation. This course evaluation that asks about belonging focus group. That includes different evaluation. Renu ma'am, please mute the mic. जिसमें आप डिफरेंट इवेल्युएशन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स के, राइट? जिसमें आप काहूट है, क्विज़िस है, पोटैटो है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, H5P है, या जिसमें आप वीडियोस में अपने क्वेश्चंस इंसर्ट करना चाहते हैं. ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके आप उनकी इवेल्युएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? And last is examples of diversity in inclusive pedagogy. Number 1, racial diversity. पहले भी मैंने बताया कि race is a population that can be distinguished from other populations within a species by genetically transmitted physical characteristics.
And racism consists of both prejudice and discrimination based in social perceptions of biological differences between people. But we can overcome with our education. Then second is color. Color, yeah, like when I born, I black, when I grow, I black. So this is just a poem I read. So, but when we are educated, and we know many things, then this thing hardly matters. So one should have to be grow within, not from outside. And third is cultural diversity. You have to taste a culture to understand it, right? So उस cultural aspect में means from different society, a group is there. We have to respect different groups to be, आपको उनके साथ collaboratively different aspects पे काम करना, तभी हम उनको include कर पाए. And cultural diversity means what is the role of recognizing cultural diversity in our classroom? कैसे कर सकते हैं? छोटी छोटी चीजें हैं. एक दिन बोलिए स्टूडेंट्स को सब अपना जो है लंच या कुछ भी एक डिफरेंट बना के लाएंगे अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग डिश, उसको सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, राइट? तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लास में आप कर सकते हैं कल्चर्स को प्रमोट करने के, सो दैट हम दूसरे के कल्चर के बारे में जानकर मल्टी मोड में काम कर, राइट? Then main job in the classroom is to teach the subject. We need to create classroom culture in order to teach more effectively. We need to be open to our students' personal cultures as well. As I told you example. As cultures blend, it is important to clarify which parts of our culture we will not sacrifice. Freedom of expression, everybody has their responsibility, civic responsibility, then respect for individual rights. Okay. And then these all are the aspects that I have already discussed with you, their socioeconomic status, gender, race, and all. So learners with special educational needs have a right to be educated alongside with their peers who do have special needs. Matter of equity and social justice. Here is an example that I have shown. First is showing equality. हम बात करते हैं ना कि सबको इक्वल दे दिया जी, हमने तो नीचे सब इक्वल है, बट इनका एज ग्रुप तो इक्वल नहीं है ना. अगर हम इक्वलिटी की बात करें, हर एक को बेनिफिट मिला, बट they are treated equally. They are treated equally here, but the last child is unable to watch the match, right? So what we have to, is it the justice? हम कहते हैं ना हमने तो जी क्लास में इक्वल एक सब्जेक्ट को पढ़ा दिया, इक्वलिटी देखी, हमें क्या करना चाहिए? Equity provide करनी चाहिए. Means in the second image, individuals are being given different supports to make it possible for them to have equal access to the game. They are being treated equitably. But what is the justice? Means जो ये barrier है, इसी को ही हटा दिया जाए. Isn't it fair? So in the third image, all three can see the game without any supports or accommodation, because the cause of the inequity was addressed. जहां पे inequity थी उसको ही address करके remove कर दिया गया. The systematic barrier has been removed. So this is how we can, give different opportunities to students. Here is another example of equality. Right. So in diversity, in summary, the students who attend schools with a diverse population can develop an understanding of the perspectives of children from different backgrounds and learn to function in a multicultural, multi-ethnic environment. Yet, if we are talking about public schools and other schools, become more diverse, demands increase to find the most effective ways to help all students succeed academically as well as learn to get along with each other. So, teachers are faced with the challenge of making instruction culturally responsive for all students while not favoring one group over another. Here, then I see you through my eyes. I think that we are different. When I see you through my heart, I know we are same. We all are the same. So what we have to do? We have to see all from our heart. As diversity means different individuals valuing each other regardless of skin, intellect, talents, or fears.
Here is again a diversity with different cultures is showing. Now some questions for I have framed for you. What biases do we bring into the class? How do white privilege and stereotype threats affect student learning and preference? What strategies might we employ to make our classroom more inclusive? And why is diversity important for the different kind of students? So this is from my side. This is another example as I have bias in the classroom. What we do? I'm almost guaranteed to have 2 seats next to me open unless one of my black friends is in my class. Second, it was not so much that the professors made the class hard, it was the study group and stuff. Sometimes you are not even invited into the study. One day I was standing in the hallway and there was this group of white kids talking, and they basically said that the only way you come to this school as a black kid is if you are an athletic scholarship or if they lower the standard. So these are the biases we generally face in some classes. How do bias assumptions, white privilege and stereotypes that influences learning and preferences in our classroom? Or if we say there is another example also, right? So these all are some questions that I have created for you. And last is, N is for never used, O is for occasionally used, R is for used regularly, W is for something you would like to try. And the last question mark for any that needs more exploration or examples, so you have to put here that, right? You have to think your teaching strategies in a wide manner. What strategies might you employ to create a more inclusive class in your next course? That you have to think. Thank you very much. Is there any question? Hello, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Actually, we have created. I have time or not? Is there any question? The session is open now. Ma'am, stop sharing the screen. Okay. Otherwise, I want to tell you what are the various cooperative learning strategies that we can use in class. There are many different strategies that we can use to make our students included in different groups. Like we can use think, pair, share, and individual, team, pair, solo. First, we have to, some students are very shy in a class, for example. Then what we can do? We can give a topic in a, group, in a team, and then ask them to discuss with each other. Then after they just comfortable in that, then we make them in 2 groups, any pair. We can divide them into 2, right? 1-to-1. And after that, when they are, very much comfortable in that particular topic, then we can make them in independent group. Another example is fishbowl, team, pair, solo, learning head together, and many traditional and online games you can plan. I have planned many games in a collaborative way in my class that you can say that, for example, hide and seek, very simple example, right? So you can collaborate your students in your different manner. So these are the strategies actually that I have applied in my PhD, because my PhD is on collaborative learning, where I used these strategies among my students. I got, wonderful results of this ability. Yes, ma'am. Basically, to change and sense of disability. So this was my talk. Is there any query or something you want to discuss? Any comments, questions? Session is open now. बहुत डिफिकल्ट तो नहीं बताया कविता मैम, मतलब नहीं मैम, एक्चुअली जब जो टॉपिक आपने लिया डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी का, एनईपी बहुत फोकस कर रही है। वो आपकी जो एक स्लाइड अभी आपने लास्ट में शो की, इक्विटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, वो कहीं ना कहीं हम अभी तक भी लैक कर रहे हैं उस चीज को। अभी तक भी हम चैट में मैसेजेस आ रहे हैं, दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू विजय सर। तो अभी भी हम कहीं ना कहीं उन चीजों से
अभी अनटच्ड है, हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं उनको, कॉन्शियस नहीं है उन चीजों के लिए। तो इसीलिए एनईपी में इस एस्पेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर हम बात करें डाइवर्सिटी की और इंक्लूसिविटी की, इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर तो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हम कहीं बायस्ड हो जाते हैं, चाहे वो कल्चर बेस्ड है, चाहे हम लैंग्वेज बैरियर्स की बात करें, लैंग्वेज के बेसिस पे भी अगर कोई बच्चा रूरल बैकग्राउंड से है तो हम उसको बिठा देते हैं, और अगर कोई कॉन्वेंट एजुकेटेड है तो हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस तरीके की बायसनेस, डिफरेंट टाइप की बायसनेस, हम आपने कहा कि किन सिचुएशंस में हम स्टूडेंट्स को एग्जॉस्ट करते हैं, तो देयर सो मेनी सिचुएशंस जहां हम स्टूडेंट्स को इस तरीके से एग्जॉस्ट कर देते हैं, उसकी लर्निंग जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है इस चीज से। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, और उन एक्टिविटीज का अगर हम पॉजिटिव रिजल्ट देखें तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है। और एजुकेशनल एस्पेक्ट्स में तो जो रोल ऑफ एजुकेशन की आपने बात की इन एड्रेसिंग इश्यूज, तो एजुकेशन तो एक ऐसा पावरफुल टूल है या पावरफुल वेपन, वी कैन चेंज द वर्ल्ड। तो हम हर बच्चा एक टीचर के लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट। तो हर बच्चे के अंदर अपनी अपनी एबिलिटीज हैं, अपने अपने टैलेंट्स हैं, और हर बच्चा एक इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है किसी भी कंट्री का। तो अगर हम इस डाइवर्सिटी को और इंक्लूसिविटी को कुछ इस तरीके के आउटकम से को ध्यान में रखते हुए अनबायस्ड होके, या जो मिस्टेक्स हम अभी तक करते आ रहे हैं उन मिस्टेक्स को ध्यान में रखें कि ये ना करें हम, और स्पेशली आने वाले टाइम में या अभी भी आ चुका है, आपने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स बताए स्पेशली फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। लिटरली मुझे सीरियसली इतने सारे टूल्स नहीं पता था कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए भी हम इतने सारे एआई टूल्स हैं, और सिंपल हमारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो हैं वो इतने सारे हम यूज कर सकते हैं। नहीं, अभी तो टाइम नहीं था, अगर टाइम होता तो मैं इसको प्रैक्टिकली भी कई करके दिखाती। मैंने मैम हम आपका एक सेशन और रखेंगे कि हम प्रैक्टिकली इन टूल्स के बारे में जान पाए, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, और जो आपने इक्विटेबल टीचिंग स्ट्रैटेजीज की बात की कि वो सभी स्ट्रैटेजीज आई थिंक हम सबकी क्लास में बहुत सारी डाइवर्स टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह हैं, हर एस्पेक्ट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, और वो डाइवर्सिटी का ध्यान में रखते हुए एक टीचर को अगर अपनी एजुकेशन इम्पार्ट करनी हो तो करनी हो नहीं, रादर करनी चाहिए, हमें उन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए डाइवर्सिटी का। और वो सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे जो 10 टाइप्स ऑफ टीचर्स आपने बताया। सीरियसली हम अगर अपने आप में देखेंगे, हम सब अलग अलग टाइप के टीचर्स हैं, लेकिन हमें यहाँ अवेयर होना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी में स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ हैं उस कैटेगरी में। तो ओवरऑल द सेशन वाज वेरी मच इंफॉर्मेटिव और वेरी मच इंसाइटफुल। हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ये एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी का, हम सबको अपनी क्लासेस से ही शुरू करना पड़ेगा ताकि हम इस एस्पेक्ट को अच्छे से कवर कर पाए और अपने कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से डेवलप कर पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आई नो तो टाइम बहुत कम था आपके पास और आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा था। Thank you. Now I request Principal Janak ma'am for formal thanks. Thank you, Patra ma'am. Good afternoon to all of you. आपने जिस डायलॉग से और इस टॉपिक पे मैम बात की, नो डाउट वो हमारे लिए क्लासरूम सिचुएशन के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं क्लासरूम सिचुएशन में। इंक्लूसिव इन एजुकेशन पॉलिसी का ज्यादा जोर है क्योंकि हमें इस कंसेप्ट को मेन स्ट्रीम में लाना है ताकि कोई भी समाज का बच्चा, कोई भी नागरिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस ना करे और समाज की मुख्य धारा में सिर उठा के चल सके। क्लासरूम सिचुएशन जितनी मजबूत होएगी, बच्चा उतना कॉन्फिडेंट होता जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कविता। थैंक यू सोनम मैम। इन फ्यूचर भी हम आपसे इस तरीके की जानकारी लेते रहेंगे और इस तरीके के सेशंस हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट। थैंक यू। बाय। थैंक यू। ओके, थैंक यू। और मेरा सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि प्लीज आप सभी सेशंस को एक्टिवली अटेंड करें। हमारे रिसोर्स पर्सन्स